हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्री एडिट। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री एडिट में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फॉर द ICAR PG exam. Yes, if you know, like we have online courses for the different subjects, the different exams like ICAR PG, ICAR PhD, ASRB, and in the ICAR PG we have different subjects like plant science, entomology, agronomy, soil science, social science, horticulture, biotechnology, the plant biotechnology. But one more subject was missing, which is agriculture engineering. From past like 1 year, we would be getting like random messages from the students, sir, why you have not included the agriculture engineering? आप लोगों ने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को क्यों छोड़ा है, उसको भी आप इंक्लूड करो, उसका भी आप गाइडेंस दो, उसका भी आप कोर्सेस निकालो, ताकि हम भी जो इस एग्जाम को दे रहे हैं उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाए। तो हम उस टाइम से ही मतलब ढूंढ रहे थे कुछ मेंटर्स को जो काफ़ी डेडिकेटेड हो, काफ़ी इंटरेस्टेड हो, जो अच्छा इस फील्ड में करे और अच्छा क्वालिटी कंटेंट डिलीवर कर पाए। तो फिलहाल के लिए जारी था खोजना, लेकिन मिला नहीं था कोई ऐसा। लेकिन टुडे आई एम वेरी हैप्पी दैट वी गॉट अ वेरी गुड मेंटर विद अ वेरी गुड एक्सेलेंट एकेडमिक एक्सपर्टीज कि उसने इस एग्जाम को एमटेक जाने के से पहले लाइक फॉर बिफोर दैट ही हैज क्रैक्ड द ICAR PG एग्जाम विद अ वेरी गुड रैंक, ICAR PhD exam with a very good rank, and currently he is been allotted to IARI New Delhi. Yes, of course, the Indian top premier institute for his PhD in the department of processing and food engineering. So you will be here, and you will be starting to guide the students who will be giving the ICAR exam, in the ICAR PG exam for the subject of agriculture engineering. आज इसका शुरुआत है, पहला वीडियो है जिसमें हम आज इस वीडियो में पूरा A to Z डिटेल्स देंगे इस एग्जाम के रिलेटेड, ICAR एग्जाम के रिलेटेड, ICAR PG एग्जाम के रिलेटेड, प्लस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्या सब्जेक्ट है, कैसा होता है, कितना डिपार्टमेंट्स है, क्या सिलेबस है, और इसका जो बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स जो रेफर करने होंगे, इसके बारे में पूरा जानकारी मिलेगा हमारे टॉपर से, जिसने इस एग्जाम को क्रैक करके आगे आया है और अभी PhD में एडमिशन लिया है। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत जल्द इसका भी ऑनलाइन कोर्सेज आने वाले हैं, मॉक टेस्ट बंडल के कोर्स आने वाले हैं, मास्टर कोर्स आने वाला है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना चाहेंगे, उनको भी काफ़ी अच्छा कंटेंट मिले। और नो डाउट हम तो हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी सब्जेक्ट्स हो, उसमें बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी हम डिलीवर कर पाएँ, एंड ऑफ कोर्स वी विल डू इट। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, आज का वीडियो को। जो भी स्टूडेंट्स आप बैचलर्स में हो और आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रहे हो एंड आपको एमटेक करना है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू डू द एमटेक, आपको एमटेक करना है, देन ICAR PG एग्जाम्स यू हैव टू राइट इट। सो इफ यू हैव टू राइट द ICAR PG एग्जाम, देन यू नीड लाइक क्रिस्प एंड क्लियर गाइडेंस अबाउट दिस सब्जेक्ट। तो आज उसी के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं, लाइक दैट इज व्हाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो। सो एंड तक बने रहिए, लास्ट तक देखना, लाइक एवरीवन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। प्लस इफ यू हैव एनी एडिशनल क्वेश्चंस, अगर कुछ भी क्वेरीज हो आपका, then you can comment on this video, and yes, our mentor is waiting to answer all your doubts and clarify everything. So Shreyash, first of all, I welcome you to this platform. So thank you so much for being here and thank you so much for joining us. तो start करने से पहले तुम्हारा intro से start करेंगे इस वीडियो को, so please. So firstly, thank you very much, sir, for giving this opportunity. So hello guys, welcome. I am Shreyash Praveen Dingore. I am from Nasik, Maharashtra. I have completed my UG and PG from Mahatma Phule Krishi Vidyapit, Rahuri, Maharashtra. Also, currently I pursuing my PhD in Processing and Food Engineering Division from ICARI, Indian Agriculture Research Institute, New Delhi, and I am happy to share I am UG and PG topper in my batch. So I secured my All India rank 6 in 2025 ICAR SRF examination. I also received Krushiton Excellent Student Award from Maharashtra State in year 2023. So Okay. today we will discuss on A to Z about agriculture engineering PG exam, which courses, which topics are included in examination. ओके तो इससे पहले श्रेयस, मैं थोड़ा ऑडियंस को ना, जो भी एग्रीकल्चर इंजीनियर के स्टूडेंट्स है वो आर लाइक वाचिंग दिस वीडियो फ्रॉम द बैचलर्स ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एमटेक के लिए तो थोड़ा मैं गाइडेंस दे दूंगा कि इस एग्जाम के बारे में, पैटर्न के बारे में। नेक्स्ट तुम कंटिन्यू करके सिलेबस और सब्जेक्ट और बुक्स के बारे में बता देना, ठीक है? मुझे 5 मिनट देना कि मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, देन यू कैन कंटिन्यू। यस प्लीज। ओके स्टूडेंट्स, like if you are willing to write this exam of ICAR PG and if you are willing to do MTech, so you have to know about this one exam which is All India exam, ICAR PG exam, which is conducted
for various subjects including the agriculture engineering. So the pattern of exam, for first of all, mode of examination is like a CBT mode. So this is a computer based test where you will be given laptops, you will be given tablets, you will be given like computers or desktop in which you have to write this exam. That is why it is computer based test. Next, duration will be 120 minutes, that is for 2 hours. Total duration of the exam will be of 120 minutes or 2 hours. Number of questions will be 120. So for agriculture engineering, it has been divided like 20 questions will be generally from general agriculture, or it will be from GK including everything, and next 100 questions will be subject specific, that these questions will come from your subject of agriculture engineering. Next, the type of questions in this exam of ICAR PG, all the questions will be MCQs types where the 4 options will be given, you have to pick one among the 4. Next, scoring, if you make like right attempt, you will get like 4 marks. If you make a wrong attempt, you will be deducted with 1 marks, and if you are making no attempt, then no marks will be deducted. So this is about the scoring. And total marks, so total marks for this exam is like 480. Total for 480 marks this exam will be conducted, and you have around 120 minutes, that is 2 hours, to write this exam. Okay, and the medium of paper, the language of paper will be only in English. So if you know, the ICRPG exam in all subjects including the agriculture engineering, the medium of language is only English. Okay, remember this. नेक्स्ट, सो व्हाट आर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में. अगर आप लोग एमटेक करना चाहोगे तो क्या क्या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है जिसमें आप कर सकते हो इस एक ही एग्जाम को लिख के. So there are 5 different departments in all India level in which you can take the admission after cracking the ICRPG exam in the Bachelor's of Engineering. So sorry, in the Bachelor's of Agriculture Engineering. तो फर्स्ट वाला प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग जो श्रेयस ने भी किया था, और अभी श्रेयस इसी में पीएचडी कर रहा है फर्स्ट ईयर से. नेक्स्ट, फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, irrigation and drainage engineering, and renewable energy engineering. So these are the 5 different departments in which you can pursue your MSc if you crack this ICR PG exam in the subject of agriculture engineering. So if you want to become eligible, आपको अगर इस एग्जाम को देना है, then you have to compulsorily complete your bachelor's from the agriculture engineering, then you will be eligible to write this ICR PG exam in this subject, and then you will be eligible to take the admission in any of the 5 departments. So this is about the eligibility for the exam and for the subject. So next thing, so whenever you think of any exam, the most common thing is like you have to know like what is the competition level. So how many students write this every year. So based on the recent data, the last data of 2025, around 735 students have written or applied for this exam, written this exam, and based on that, what are the total number of seats? Total number of seats कितने हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, वो भी clearly defined है. This is like 2025 data. अगर आपको पता नहीं है तो every year in the month of March or April, when the applications are announced for this exam, ICRPG exam, the ICR will release its brochure displaying the total number of seats and total number of fellowship seats under different categories, and this is from the 2025. So these seats more or less will be remaining same year by year, only there will be minor difference. So please check the brochure once it is released, and we will be also announcing the giving you all the updates regarding the exam release, the dates release. So if you have not yet joined any of our social media platforms, from the links that are given in the description box, subscribe our YouTube channel and follow us on the Instagram, and also you can join our WhatsApp channel where you will get all the updates. Okay, and we regularly conduct the quizzes in the Telegram platform too. So if you are interested, and if you are like planning to prepare for any of the government exams, those quizzes will also help you. You can join for that, including the ICRPG. It will also help in, of course, in the ICRPG. Along with that, it will also help in the any other subjects in any other exams. So if you want to do it, like it is for free, just go and attend the regular quizzes on the Telegram. Okay, so coming back. Total number of seats 74 and 74 for both processing and food engineering and soil and water conservation engineering, and farm machinery में 65 seats है. Next, for drainage, irrigation and drainage there are 30 seats, and for renewable energy engineering there are 24 seats, in which the another important thing is about the fellowship seats. This is like ICR PG fellowship seats. If you know about this fellowship seat, I'll tell you the benefits in the upcoming slides, but if you do not know about this, like this is the fellowship seats, the prestigious ICR fellowship, PG fellowship, it will be given for only total of 4 top students for the different departments, like top 4 from the processing and food engineering, and top 4 from the soil and water conservation engineering, and top 4 from the farm machinery, and only 2 from the irrigation and drainage, and there is only 1 fellowship seat from the renewable source. And these fellowship seats are again divided into categories. Like if you are belonging to UR, OBC and EWS, it is one and the same for the fellowship. There is no distinction. So 3 is allotted here for all the 3 departments, and 1 is for this department, and 2 is for the department of
the engineering drainage, the irrigation and drainage engineering. And there are category wise seats too, which are divided, and these category wise seats, it generally varies from year to year. It is not strict that only SC seats will be there, SC seats will not be there. It depends on the different departments how it is been divided, and it will change from year to year. But you can have a general idea just by seeing the 2025 pattern. Okay. So this is about total number of seats. Next, so in the eligibility, one more important thing along with the pursuing the bachelor's in agriculture engineering is maintaining the CGPA. So if you want to be eligible for this exam, then you should be having minimum of 6.5, and this is applicable for general, OBC and EWS. And if you are from SC, ST, PWD and third general, even 5.5 and above is fine, but not below 5.5. And this is for the 10-point scale, for which like majority of agriculture universities or the deemed universities follow this 10-point scale only. So this is what you have to follow. But if it is 9, 8, the standardization has been given, and this is the equivalent scores have been given, it has to follow this one. But if it is in the percentage, if you are getting your results in the percentage, then minimum 60% is needed for the general, EWS and the OBC NCL or the UPS, or 50% if you are like SC, ST or the third general. This is about the eligibility. So remember this is also important. ये भी important है. So एज लिमिट क्या है, इसमें सिंपल है कि एटलीस्ट 19 ईयर्स एंड अबव होना चाहिए 31st ऑफ 26 अगस्त में, अगस्त तक, तो जहां तक आपका जो है 19 एंड अबव होना चाहिए, एंड इसका जो कोई अपर लिमिट नहीं है, आप चाहे कभी भी इसको लिख सकते हो. नेक्स्ट, स्कॉलरशिप डिटेल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम हियर. तो जो बेनिफिट है फेलोशिप का, जैसे मैंने बोला ICRPG जो प्रेस्टिजियस फेलोशिप आपको मिलेगा अगर इफ यू आर एलिजिबल, देन यू विल बी गेटिंग लाइक 12,640 पर मंथ फॉर द स्पैन ऑफ 2 years, and then 6,000 contingency for the span of 2 years. Per year इतना मिलेगा 6,000 प्लस हर महीने 12,640 पर मंथ मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट, इफ यू आर नॉट एलिजिबल, मान के चलो आप एलिजिबल नहीं हो, बिकॉज ऑफ मेरिट थोड़ा कम मार्क्स आ गए लेकिन एलिजिबल नहीं हो, even then you will get the NTS fellowship. This is like fixed 5,000 per month. Whoever has written this exam, if they are not eligible for ICRPG fellowship, they can get this NTS fellowship, but provided they pursue their MSc other than their domicile state or the home state. And also it is admission should be taken to ICAR counselling only. If you are taking the admission through ICAR counselling outside your domicile state, then you will be eligible to get this NTS fellowship. Next, in case if you are not eligible for ICR fellowship, but if you are getting the admission at IRI, the extra advantage is here you will be getting the fellowship of 7,560 per month plus 6,000 contingency per year for the span of 2 years. So this is the added advantage where you can come into IRI. Still, if you are unfortunately not getting the PG fellowship seats because the number of seats are less, the PG fellowship seats are less, but still if you anyhow get the IRI, you will get some extra advantage from the NTS, that is 2,560 extra you will be getting, which is 7,560 per month. So this is about the fellowship details for your subject, and it is common to all subjects of ICRPG. Next, what are the different types of questions that will be asked? So just like for every other subjects, here the questions will be like assessment and reasoning type, arranging the sequencing type, direct MCQs are there, statement wise questions will be there, numericals will be there, match the following will be there. But everything will be in MCQs type only, but these are the entire pattern, different kinds of questions that are asked. So if you have not yet like analyzed the previous year papers, not yet watched it, not yet downloaded it, you don't have it, just visit our website. So I will be dropping the link in the description box, go and check it. So in that you can directly click and freely download all the PYQ papers along with the answers, so which will definitely help you in analyzing the paper and understanding the level of paper and preparing accordingly. Okay, so you can do that, it will be a lot more beneficial. Next, every student who will be thinking of pursuing IR studies would be definitely having this thought of coming into IRI, pursuing their IR studies from IRI. But how much marks or how much rank is prerequisite, like how much minimum is required to get into IRI? That will be the most common question among you people. So about the marks, like anyhow Shreyash will inform you about the marks, because total marks is 480. So what is the general trend about how much students usually score for 480? You will convey. But rank, if you are from general category and if you want to come into IRI, you have to definitely secure the single digit rank. So it is like mandatory that you have to secure the competition such that you have to compulsory secure single digit rank in order to get IRI for general. But if you belong to any other category, the cutoff varies from year to year depending on number of students who are writing it. But for general, it is single digit only. Okay, so this is how much you have to get to come into IRI. Next,
So in IRI, like how many seats are available? So in IRI, what are the departments that are available? In IRI, there are 3 different departments. One is like processing and food engineering, soil and water conservation engineering, and farm machinery and power engineering. These are the 3 different departments which are available at IRI. You can take admission at IRI in these 3 different departments at Indian Agriculture Research Institute, that is IARI. Total number of seats for power processing and food engineering is 5, soil and water conservation is 4, and farm machinery is 4, in which again they are divided into UR, SC, ST, OBC, EWS and PWD. Anyhow, UR rates more or less remain the same every year, but the category seats will vary, will change from year to year. So for that, you need to keep checking, as I told you, the ICAR counseling brochure that will be released in the month of March or April every year. Okay. So next, the syllabus wise agriculture. Now from now, Shreyash will continue and he will explain everything in detail. So after watching this video, as I told you, अगर आपको कुछ भी डाउट हो ना, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, वहां से आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा. ओके श्रेयस प्लीज, तो यहाँ से कंटिन्यू करना और ऑडियंस को अच्छे से बताना कि एक सब्जेक्ट के बारे में, सिलेबस के बारे में एंड ऑल्सो अबाउट द बुक्स. थैंक यू सर. सो वेलकम बैक. So ICAR PG exam is held for 480 marks, which included 120 questions. So there are basically 20 questions are asked from the general agriculture, then general knowledge, reasoning ability, and engineering mathematics. Like there are various research institutes in India which are work for various agriculture commodities. They ask about their specialties and location. And in engineering mathematics, there are differential equation, vector calculus, matrix, and integration. They directly ask numerical on matrix and types of matrix. There are also some direct MCQ types of question, and there are different general knowledge questions asked, like agriculture schemes released by government every year. There are 1 to 2 questions asked on agriculture schemes. Also, there are 100 questions which for 400 marks, which includes farm machine and power engineering, processing and food engineering, soil and water conservation, irrigation and drainage, renewable energy engineering, and farm structure. There are various types of questions are asked, as sir told before. Then next, so before giving any exam, the most important thing is exam pattern and exam syllabus. So as sir already told about exam pattern, we will see about the exam syllabus and the books referred for crack this exam. So in the ICRPG exam is the syllabus of ICRPG exam is divided into 7 units. So one by one we will discuss. So in यूनिट फर्स्ट में बेसिकली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स का पार्ट कवर किया है. इन दिस एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, like there are direct MC question or one liner numerical is asked, like mean, median, mode, and types of theory of probability. There is a simple like the probability problems on cards, dice, they will ask. Also differential and integral calculus. यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन, डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन को भी क्वेश्चन आ सकता है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स के ऊपर वो हर साल एक क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, या फिर वो आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पूछते हैं. देन लिनियर अलजेब्रा एंड फोरियर सीरीज. फोरियर सीरीज में भी वो आपको मतलब वो ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको ट्रिक मालूम है तो आप उसको 5 या 10 सेकंड में आप उसका आंसर निकाल सकते हैं. वो देखने में आपको क्वेश्चन बड़ा लगता है एक्चुअली, लेकिन वो सिंपल रहता है. उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस, डेरिवेटिव्स, वेक्टर अलजेब्रा, एलिमेंट्री न्यूमेरिकल एनालिसिस, लाइक देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ series, Taylor series, Newton series. They will ask 1 to 2 questions from this. Then unit second, this electric motors type, performance, selection, installation, like AC and DC current, electric motors, the numericals on electric motors, voltage, Ohm's law, they have asked 1 to 2 questions. Then measuring instruments, fundamentals of computers and power distribution. 1 to 2 questions are asked from this unit. Then unit 3, important. This is the important one.
thermodynamics. There are different types of laws of thermodynamics, numerical systems, and also heat and mass transfer. In heat and mass transfer, different types of boilers, dryers, and there are different types of numericals based on thermodynamics laws asked every year. For this textbook of thermal engineering, which author was R.S. Khurmi and J.K. Gupta, it is preferred. In that book, almost all types of content will be covered. Yeah, and also for mathematics, uh, the book is very uh, big, but this only we have to cover this topic from this book, Higher Engineering Mathematics by B.S. Grewal. Then there is also fluid mechanics and theory of machine. Mainly, theory of machine is also known as TOM, and also strength of machine, SOM. So basically, these are from the civil engineering part. So they ask about the factual questions and numerical part from this. In Unit 4, soil mechanics, soil classification, compaction and strength of soil, engineering mechanics. So this is some ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, पर इसमें से आपको 2 से 3 ही क्वेश्चन आते हैं, और आपसे आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये भी आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से थोड़ा डिफरेंट पार्ट है. Yes, this is the important one, Unit 5 to Unit 7. It covers almost half of the paper. So Unit 5, it is related to farm machine and power engineering. इसमें आपको importance of farm equipment and role of mechanization in enhancing productivity and profitability. तो इसमें आपको basic question पूछे जाते हैं जो आपको mechanization and in agriculture के related हो. Then analysis of forces, design and production of farm machine and power units. Yes, इसमें आपको numerical पूछे जाते हैं, या फिर जैसा हमने देखा कि क्वेश्चन का टाइप रहता है अरेंज द ऑप्शंस इन सीक्वेंस. सो इन डिजाइन एंड प्रोडक्शन वो आपको 4 to 5 प्रोसेस देते हैं, वो आपको अरेंज करना रहता है कि लाइक इन कंबाइन हार्वेस्टर पहले वो कट होता है, उसके बाद वो फ्लो होता है, उसके बाद उसका थ्रेशिंग होता है, और उसके बाद स्ट्रॉ एंड प्रोडक्ट अलग अलग होता है. तो ये प्रोसेस अरेंज करने रहता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. देन टिलेज एंड ट्रैक्शन ऑपरेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फार्म मशीनरी. देन फार्म इंजन. यस, फार्म इंजन पे हर साल 2 से 3 क्वेश्चन रहता है, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है. देन टाइप्स ऑफ फार्म इंजन लाइक 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, उसके सिलेंडर के ऊपर न्यूमेरिकल रहता है. टर्मिनोलॉजी पे आपको डेफिनेशन पूछा जाता है, लाइक स्ट्रोक बोर रेशो, देन थर्मल कैपेसिटी एंड स्पीड, पिस्टन स्पीड, इसके ऊपर आपको 1 लाइनर न्यूमेरिकल रहते हैं. उसके बाद हाउ मच अमाउंट ऑफ फ्यूल विल बी कंज्यूम, इस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं. देन ट्रैक्टर्स एंड पावर टिलर्स. देन ट्रैक्टर स्टेबिलिटी एंड ऑपरेटर कंफर्ट्स. इसमें मेनली आपको ऑपरेटर कंफर्ट में 1 लाइनर क्वेश्चन डायरेक्ट एमसीक्यू आ जाते हैं, लाइक हाउ मच द मैक्सिमम डेसिबल वैल्यू ऑफ साउंड, देन विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन. इसमें इर्गोनॉमिक्स के हिसाब से में से क्वेश्चन आते हैं. देन फील्ड कैपेसिटी. यस, एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी, थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी, इस पे भी 1 से 2 न्यूमेरिकल आते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देन कॉस्ट एनालिसिस, इसमें डिप्रिसिएशन, सैल्वेज वैल्यू, ट्रैक्टर का जो फार्म इक्विपमेंट का है वो उसका कॉस्ट एनालिसिस आता है आपको. मतलब आपको परचेसिंग अमाउंट देते हैं और 10 साल बाद इसका वैल्यू कितना होगा, डिप्रिसिएशन, वो पूछा जाता है. टेस्ट कोड, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट कोड लाइक BIS, ISI. वो आपको प्रोसेस का या टेस्ट का नाम देते हैं और टेस्ट का कोड डायरेक्टली पूछते हैं, तो आपको जो मेन टेस्ट कोड है वो आपको याद रखना पड़ेगा. अपकमिंग क्लास में जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम इसके बारे में देखेंगे. उसके बाद सेफ्टी एंड एर्गोनॉमिक्स प्रिंसिपल हमने पहले देखा, जैसे डेसिबल वैल्यू होगा, वाइब्रेशन, स्टीयरिंग मैकेनिज्म, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा. देन रोल ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक डेवलपमेंट. यस, this is main from this role of energy in economics to
solar refrigerator. It is come under REE, like renewable energy engineering. ये पार्ट renewable energy engineering के अंडर आता है. इसमें हम देखेंगे सोलर विंड एंड बायो एनर्जी, विंड मिल के टाइप्स, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, उसके ऊपर वो उसके भी एग्जाम्पल की कौन सा टाइप कहाँ यूज़ होता है, उसका स्पीड कितना आता है. उसके बाद उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, टिप स्पीड ऑफ ब्लेड. उसके बाद गैसिफायर एंड बायोगैस प्लांट. यस, इसमें गैस का प्रोपोर्शन कितना रहता है, गैसिफायर के टाइप्स कितना है, कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सा रास्ता ज़्यादा अमाउंट प्रोड्यूस बायोगैस अमाउंट प्रोड्यूस करता है. बायोफ्यूल्स फ्रॉम बायोमास, कलेक्शन, कैरेक्टराइजेशन, स्टोरेज ऑफ बायोमास, सोलर कुकर एंड सोलर रेफ्रिजरेंट. So इसमें भी different types of process densification, biofuels like methanol and ethanol and others. So इस पे भी आपको डायरेक्ट MCQ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं या वो आपको ट्रू और फॉल्स पूछते हैं. देन यूनिट 6, इट इज़ फ्रॉम प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग. इसमें आपको बायोकेमिकल एंड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स, इसमें आ जाता है साइज, शेप, स्पेरिसिटी, राउंडनेस, बल्क डेंसिटी, ट्रू डेंसिटी. आपको इसमें वन लाइनर न्यूमेरिकल देखने के लिए मिल जाएगा, लाइक दे गिविंग द वैल्यूज लाइक लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस एंड यू हैव टू कैलकुलेट स्पेरिसिटी. सो इट इज़ सिंपल एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम. Also quality control, safety of raw and finished product, principal practice of equipment for drying. Drying is one of the important topic. There are different types of dryers and its function. They ask about the functions. वो डायरेक्टली आपको फंक्शन देंगे, ये किस ड्रायर का फंक्शन है या फिर ये कौन से टाइप का ड्रायर है. तो आप ये ड्राइंग इज इम्पोर्टेंट. मिलिंग, यहाँ पे बहुत सारे मिलिंग है, लाइक राइस मिलिंग, व्हीट मिलिंग, पल्स मिलिंग. सो इसमें भी बहुत सारे इक्विपमेंट है. राइस मिलिंग में जैसे हम देखते हैं डी हस्कर, हलर्स, पॉलिशर्स, उसमें भी उसका स्पीड कितना, कैपेसिटी है, कितना टाइम लगता है. पल्स मिलिंग में ड्राई मिलिंग, वेट मिलिंग, उसमें भी various types of methods are there. So they directly ask about the questions on milling. Also there are some numericals like milling efficiency, cleaning efficiency and others. Then separation and storage agriculture production, produce and byproduct. There are different types of separation techniques. Also material handling equipment like belt conveyor, screw conveyor and other. There are आप देखे जाए तो screw conveyor पे न्यूमेरिकल आता है. पिछले साल screw conveyor पे न्यूमेरिकल भी देखने के लिए मिला था. Then the velocity of belt in belt conveyor. These types of questions are asked in exam. Also farmstead planning. From farmstead planning to uh, uh, cooling load calculation, it comes under the farm structure part. So they यहाँ पे आपको लाइक पोल्ट्री, शिप फार्मिंग, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है. देन सीड प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस एंड इक्विपमेंट, यहाँ पे आपको सीड प्रोसेसिंग के, ब्रीडिंग के टाइप्स आपको डायरेक्टली एमसीक्यू यहाँ पे मिल जाते आ जाते हैं. देन फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स. यस, यहाँ पे आपको डायरेक्टली प्रोसेस का प्रोसेस बताई जाती है और आपको एमसीक्यू में चूज करना पड़ता है कि ये कौन सा फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक है. देर आर 10 to 14 food preservation techniques. Then refrigeration and air conditioning. Last year they asked about the refrigerant number, and there are different types of air conditioning systems. Also मतलब रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन में कौन कौन से रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं, ऑर्गेनिक, क्लोरो, जो मेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अमोनिया, वाटर, उसके रेफ्रिजरेंट नंबर, उसके बाद उसका वर्किंग, कौन कौन से एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन साइकिल से, वो आपको याद रखना पड़ेगा. इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन. Also there are some numericals on refrigeration. Then waste management, cost analysis and food processing plant layout, like milk processing plant and others, like farm, fast moving consumer goods, sanitization practices. There is a theory question asked on that. So next one is last
Unit 7, which is from Soil and Water Conservation Engineering and Irrigation and Drainage Engineering. In Soil and Water Conservation Engineering, surveying and leveling. So in surveying and leveling, different types of instruments are used. So they ask about the functioning of the instrument, also numericals related to corrective, length, area, etc. Then hydrology, water resources India, like there are in India various types of water resources like river, pond, dam. So they ask about the directly ask about direct MCQ are asked from this topic, efficiency and water use. Then irrigation system and equipment, water convenience, associated efficiency and soil plant water relationship. Yes, from this to this, there are many numerical asks like water application efficiency, water conveyance efficiency, pan evaporation, then water requirement of crops like duty, delta. There is a number of questions are asked previous year from this topic like water requirement of sugar cane, wheat crop, estimation of evaporation, ऐसा जैसे कि मैंने पहले बताया water requirement of various crop, water harvesting and use. There are many water harvesting structures like check dams, then chute spillway, and there are hydraulic jump is one of the important topic. There is different types of jumps. They ask about पिछले साल फ्रॉड नंबर के ऊपर क्वेश्चन पूछा था. मैच द फॉलोइंग में आपको एक तरफ फ्रॉड नंबर और एक तरफ टाइप्स ऑफ जंप पूछे जाते हैं. वैसे ही देखा जाए तो land use capability classification, there are different types of classes of land like 8 classes 1 to 8 according to the water. Then groundwater development, wells and pumping. Yes, in wells and pumping there are different types of pumps like centrifugal pump, tube wells, and another they ask about numericals on discharge, where continuity equation, Bernoulli's equation, orifice. So from this topic 1 to 2 numerical are asked. Soil erosion and its control. Yes, uh, there are different types of soil erosion and directly question asked from this topic, so it is important 1 to 2 question are asked from soil erosion. Land shaping and grading equipment, practices hydraulic structures. Various hydraulic structures are used in to storage the water, drainage of irrigated and humid areas like bio drainage, mold drainage. Also salt balance and reclamation, also known as leaching requirement. So in leaching requirement there is one liner numerical will be as leaching. आपको 1 से 2 लाइन का न्यूमेरिकल रहता है. आपको कितनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का वैल्यू का रेंज पूछते हैं. सो इसमें से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं. देन saline and alkaline sand, there are different values for EC for saline and alkaline soil. Then next one is हाँ, so which books are prefer, कौन से बुक आपको पढ़ना है. सो जनरल एग्रीकल्चर के लिए अ कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, एसेंशियल ऑफ एग्रीकल्चर. इसको छोड़ के भी जो एग्रीकल्चर स्कीम्स है, एग्रीकल्चरल स्कीम्स रिलीज बाय और बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो ये भी आपको पूछे जाते हैं कि ये स्कीम कहाँ किसके इसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है. Also one important thing is there are various ICAR research institute in India. So there are like first CIRCOT, their location Mumbai, and their specialty or for which they are work like cotton. Then another is NDRF, kernel, milk or dairy product we can say.
सो लाइक दिस वे हर साल 1 से 2 आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम दिए जाते हैं, या फिर या इसका लोकेशन पूछा जाता है, या ये किसके लिए ये काम करते हैं, ये पूछा जाता है। तो ये जीके के हिसाब से हम आगे आने वाले क्लास में इसको भी कवर करने वाले हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ processing and food engineering. For this, these three books are very important. So for theory and most of the concept are सारी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट इसमें कवर हो जाएगी, लाइक यूनिट ऑपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन प्रोसेसिंग बाय के एम सा एंड के सिंह। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। अनदर वन इज पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ सीरियल पर्सन एंड सॉइल सीड बाय ए चक्रवर्ती। एंड फॉर न्यूमेरिकल टाइप you can prefer solve numerical problem in food processing and technology by Irfan Ansari. And yes, this is the important one, principle of agriculture engineering volume 1. इसमें आपको फार्म मशीनरी एंड प्रोसेसिंग दोनों टॉपिक कवर हो जाएगी। इसमें आपको एमसीक्यू भी, और जो इसमें कवर नहीं है ये भी इसमें कवर हो जाएगा। मतलब बोथ टॉपिक विल बी कवर इन दिस विच इंक्लूडेड फार्म पावर, फार्म मशीनरी, post-harvest technology, instrumentation, ergonomics, greenhouse technology. So it is very important book, which is the author is T.P. Oja and A.M. Michael. Then for farm machinery and power engineering, elements of agriculture engineering by Dr. Jagdishwar Sai. इसमें आपका रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग का टॉपिक भी कवर हो जाएगा। एंड फॉर ऑब्जेक्टिव एंड न्यूमेरिकल पर्पज फार्म मशीनरी, फार्म पावर एंड मशीनरी इंजीनियरिंग बाय Dr. I. Suresh and Sanjay Kumar. These two books are very important for point of exam. Then for soil and water conservation engineering HWC, author is Dr. I. Suresh, serving and leveling part 1 and watershed hydrology. In this is the important book. यहाँ पे भी आप इसमें भी आपका बहुत सारा theoretical part और numerical both कवर हो जाएगा। लाइक इसमें भी कंटूर फार्मिंग का दिया हुआ है। कंटूर के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं सर्विंग प्लान लेवलिंग के लिए। इसमें न्यूमेरिकल दिए है, वो भी पढ़ लेना। उसके बाद वाटरशेड हाइड्रोलॉजी, इसमें आपको इवेपोरेशन, देन रेन गेज, उसके बाद स्टेशंस एंड रेन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में इसमें दिया हुआ है। देन इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग, यस, इरिगेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस बाय A.M. माइकल। इसमें आपका ऑलमोस्ट सब टॉपिक कवर हो जाएगा। इसमें न्यूमेरिकल भी है। देन प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 फॉर FMP एंड PFE एंड वॉल्यूम 2 फॉर IDE एंड HWC। इसमें भी आप ये भी सेम ऑथर है A.M. माइकल एंड T.P. ओजा। तो ये दो बुक आप इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग के इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट बुक, इरिगेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। एंड वैसे देखा जाए तो आरई रिन्यूएबल इंजीनियरिंग का पार्ट जगदीश्वर साई बुक जो पिछले स्लाइड में देखा उसमें भी कवर हो रहा है। और डिटेल में ये कवर करने के लिए एनर्जी टेक्नोलॉजी, नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल एंड कन्वेंशनल बाय एस राव, ये भी बुक हम कवर करेंगे। इसमें भी बहुत सारा दिया हुआ है। देन what is the opportunities after the MTech or giving ICAR examination? So first one is you are eligible for giving exam of ARS, Agriculture Research Scientist, SMS, Subject Matter Specialist, and STO, Subject Technical Officer, which is post of Government of India. Then Assistant Professor in Agriculture Universities or another universities which are related to agriculture engineering. Research and Development, R&D in CSRI Institute, various government and private lab like FSCS, AI. Then recruitment as Central Silk Board, Rubber Board, and other departments of India, Government of India and private sectors. Also quality assurance officers in FSSAI labs or NABL labs, and also in private companies like farmer producer companies, food processing, FMCG, fast moving consumer goods companies, also food safety officers. जैसे कि देखा जाए कि बहुत सारे स्टेट अपने पब्लिक सर्विसेज के तरफ से बहुत सारे फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट निकालते हैं, तो उसमें भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। और मास्टर डिग्री हो गए तो आप
तो ये भी और अच्छा हो जाएगा. Then NGO for soil and water conservation and irrigation drainage engineering candidate, various types of NGO like Pani Foundation, BIAP, they are work for farmers. And private sector, you are like farm machinery and power engineers, they are work in various companies like Mahindra, Tafe, John Deere, then also in farm equipment companies like Shaktiman, they work as a sales and marketing or territory manager or R&D department or production. So this is total about the agriculture engineering PG examination. सो आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख देना, हम ज़रूर उसको आपको आंसर करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग लेक्चर्स. देन वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.